Good day everyone, welcome to the NTV and you're watching NTV News, your source for exclusive news and entertainment. This is Pandita bringing you to the top stories from India and around the world, and the time is exactly 9:30. China's President Xi Jinping has cautioned US President Donald Trump, stating that the world's two largest economic risks coming into the conflict. If the sensitive issue of the self-ruled Taiwan, which Beijing claimed as the own, is mismanaged. This warning was reported by the Chinese state media. According to the report, during their bilateral summit, President Xi described peace and stability across the Taiwan Strait as the most important issue in China-US relations. President Trump began his two-day visit to China with praise for his host, referring to President Xi as a great leader and a friend, and expressed hope for a fantastic future together for both nations. However, President Xi adopted to more reserved tone, emphasizing that the two countries should be partners and not rivals, and immediately brought up into the critical matter of the Taiwan. That was an honor like few have ever seen before. And I think I was particularly impressed by those children. They were happy. They were beautiful. The military is obvious. It couldn't be better, but those children were amazing and they represent so much. And I know they represent so much to you. You and I have known each other now for a long time. In fact, the longest relationship of our two countries that any president and president has had, and that's to me an honor. We've had a fantastic relationship. We've gotten along. When there were difficulties, we worked it out. I would call you and you would call me, and whenever we had a problem, people don't know, whenever we had a problem, we worked it out very quickly. We're going to have a fantastic future together. Such respect for China, the job you've done. You're a great leader. I say it to everybody. You're a great leader. Sometimes people don't like me saying it, but I say it anyway because it's true. I only say the truth. And I just want to say on behalf of all of the great delegation that we have the greatest businessmen, the biggest, and I guess the best in the world. We have amazing people, and they're all with me. Every single one of them, we asked the top 30 in the world, every single one of them said yes. And I didn't want the second or the third in the company. I wanted only the top. And they're here today to pay respects to you and to China. And they look forward to trade and doing business, and it's going to be totally reciprocal on our behalf. So I really look very much forward to our discussion. It's a big discussion. There are those that say this is maybe the biggest summit ever. They can never remember anything like it. I can say in the United States, people aren't talking about anything else. The suspense over Kerala next chief minister has concluded. The Congress party has selected the 61-year-old who previously served as the leader of opposition in the state assembly. The decision was made over the other potential candidates including K.C. Venugopal and Ramesh Chintala. The announcement was initially anticipated for yesterday evening but was postponed to the Thursday. Today the final name was revealed, bringing an end to 10-day period of uncertainty. Satishan, who has no prior experience in the ministerial role, attributed his significant advancement to the backing of the United Democratic UDF. Namaskar. The Congress Legislature Party had met in Thiruvananthapuram on May 7, 2026 and had unanimously resolved to authorize the Congress President to appoint the new leader of the CLP in the state of Kerala. Accordingly, the Congress President has held extensive discussions with the chairperson of the Congress Parliamentary Party, leader of the opposition in the Lok Sabha, the AICC observers who had met with the newly elected MLAs on May 7, 2026, and many other leaders from the state, including MPs, former PCC presidents, have also been consulted. Based on all these discussions,
it has been decided that Shri V.D. Satishan be appointed as the leader of the CLP. Thank you so much. India's External Affairs Minister S. Jaishankar delivered a significant address at the BRICS Foreign Minister meeting held in New Delhi. The discussion focused on global cooperation and strategic issues. He urged member states to prioritize collaboration on development, economic stability, peace, security, and the fight against terrorism. The high-level diplomatic gathering took place amidst escalating global political tension, economic uncertainties, and the ongoing conflict in various regions, making his remarks particularly noteworthy. Excellencies, delegates, colleagues, Namaskar, a very good morning and a warm welcome to India for this meeting of the BRICS Ministers of Foreign Affairs and International Relations. As Chair, I thank each delegation for their presence and for their continued commitment to strengthening cooperation within the BRICS framework. All of us remain in close and regular contact through bilateral and multilateral engagements. Gathering today for the BRICS meeting is, however, a special occasion. It allows us to exchange perspectives and encourages us to develop convergences. And in this complicated and uncertain world, that is of ever greater importance. Excellencies, India's chairship appreciates your support, which has contributed to the steady progress of our work. To date, we have organized over 80 BRICS meetings with active participation from all members. These engagements have strengthened cooperation and advanced dialogue across sectors. We look forward to building on this momentum. Promoting a more inclusive and collaborative BRICS framework, we as Chair have been engaging partner countries as well. We have also taken forward discussions on institutional development, including integration of new members through a stock taking and updatation of existing mechanisms. It is essential for the smooth advancement of BRICS that later members fully appreciate and subscribe to the BRICS consensus on various important issues. Excellencies, we meet at a time of considerable flux in international relations. Ongoing conflicts, economic uncertainties, and challenges in trade and technology and climate are shaping the global landscape. Chief Minister Mohan Charan Majhi convened a significant meeting today, drawing considerable attention from the political and administrative circles. This gathering is reportedly to commemorate the government's 2-year anniversary. The meeting took place at Lok Seva Bhavan at 11 am. All ministers were present to discuss their respective departmental programs, schemes, and the progress with the Chief Minister. The meeting is expected to feature an extensive review for the government achievement over the past 2 years, the reach of its schemes among the public, and the future action plans. And additionally, the Chief Minister will consult with the Minister on the planning of upcoming government festivals, events, and the strategies to further strengthen public outreach. Ministers are scheduled to present their departmental report card to the Chief Minister today. The meeting was attended by the Chief Minister Mohan Charan Majhi, Deputy Chief Minister K.V. Singh Deo, and the Pravati Parida, and the Minister from the various departments. Chief Secretary Anu Garg made key announcement regarding this event. So, all secretary meeting re hame prayah every 15 days re amar expenditure or revenue केते आमर एक्सपेंडिचर होछि केते आमर रेवेन्यू बढ़िला घटिला कोन हैला तो सेटा आमे रिव्यू करू सब सेक्रेटरी मानक संगरे सेटा प्रथम सेकंड आमे अन्य अन्य जो किछि बड़ बड़ जिंस थाए सेटा आमे डिस्कस करू कि को जिंस जदी भलो किए करिछि ताकू केमिति अन्य माने भी करि परिबे सेटा आमे करू तापरे जो जिंस सपोजिंग हेबा को अछि सेटा आमे समस्त को जणाऊ तो फॉर एग्जांपल एबे सुप्रीम कोर्ट गोटे समाधान समारोह माने गोटे अदालत बढ़िया जो थरे केसेस रिजॉल्व करिवे तो आमे समस्त को सेटा जणाइले लॉ सेक्रेटरी सेटा जणाइले तापरे माननीय मुख्यमंत्री जो आमको बेड़े बेड़े
यूआई नोट पठाउछंती कि एटा करिवार अछि सेटा करिवार अछि तारो कोन स्टेटस अछि सेटा हमें रिव्यू कलु आउ आज विशेषतः कलेक्टर कोरापुट आसीथिले तो आमे तांकर सबु कलेक्टर माने तांकर जिल्लार गोटे स्ट्रेटेजिक प्लान बनैछंती आउ 25 टॉप प्रायोरिटी प्रोजेक्ट्स सेथरे करिछंती आउ आमे तांकू रिक्वेस्ट कले तो से आज तांकर से प्लान सबु सेक्रेटरी मानक सामने प्रेजेंट कले और सेक्रेटरी माने भी देखिले कि अच्छा रोड प्रोजेक्ट अच्छी तो रोड सेक्रेटरी नोट कले आ वाटर रिसोर्स अच्छी तो वाटर रिसोर्स सेक्रेटरी नोट कले तो सो दैट समस्ते तांको जो भी सपोर्ट देबा कथा से प्लान को अचीव करिबारे सेटा हमें करिबारे तो एटा आमे कलेक्टर्स मानक सांगरे गोटे जोगाजोग रखिबार प्रक्रिया आरंभ करिछु कि आमे केमिति तांका सांगरे करिबा तो गोटे तो आमे आपण माने जानि छंती फिक्स डे रे तांका सांगरे वीडियो कॉन्फ्रेंस रे करूछु तत् व्यतीत बेडे बेडे आमे जणेंकु आइदर वीसी माध्यम रे और जेहेतु से फिजिकली आजि थिले तो फिजिकली तांको आमे जणे जणंकु प्रत्येक आमर कॉन्फ्रेंस रे तांको प्रेजेंटेशन टा करूछु. Let's take a break. We will be back soon. नमस्कार आपन कोन मीडिया ओ एंटरटेनमेंट जगत प्रति पैशनेट आपन को भितरे जदि कंटेंट क्रिएट करिबारो कैमेरा आगरे कथा कहिबारो किंबा डिजिटल प्लेटफॉर्म रे कामो करिबारो इच्छा अछि ताहेले एही सुजोग आपन को पाई मु कथा हेउची एनटीवी निष्कर्षा विषय रे ओडिसा रो एको विश्वस्त मीडिया चैनल जहा यूट्यूब टेलीविजन एवं ओटीटी प्लेटफॉर्म रे लक्ष लक्ष दर्शकों पाखो पहुंचु अछि आम चैनल रो हेडक्वार्टर अछि कटक ओडिसा रे आउ आमे वर्तमान आम टीम एक्सपैंड करूछु आमे एबे 5टी इंपोर्टेंट पोजीशन पाई कैंडिडेट खोजुछु. प्रथम वीडियो एडिटर प्रीमियर प्रो बा आफ्टर इफेक्ट्स जानुथिले आपण आम पाई परफेक्ट. द्वितीय ग्राफिक डिजाइनर विजुअल स्टोरी टेलिंग जानुथिबा क्रिएटिव माइंड. तृतीय सोशल मीडिया मैनेजर डिजिटल ऑडियंस बुझुथिबा एवं प्लेटफॉर्म ग्रो करि पारुथिबा व्यक्ति. चतुर्थ कॉपी एडिटर कम एंकर जी लेखा भी जानती कैमेरा आगरे भी कॉन्फिडेंट. एवं पंचम कंटेंट क्रिएटर ओ एंकर निजो आइडिया द्वारा कंटेंट तैयारी करी ऑन कैमेरा प्रेजेंट करि पारुथिबा टैलेंटेड व्यक्ति. क्वालिफिकेशन विषय रे कहिबाकू गले फ्रेशर हुअंतु बा एक्सपीरियंस्ड आम पाखरे समस्तंको पाई स्थान अछि. टेक्निकल रोल्स पाई प्रीमियर प्रो बा आफ्टर इफेक्ट्स रो नॉलेज दरकार. ऑन कैमेरा रोल्स पाई कैमेरा आगरे काम करिबार एक्सपीरियंस एको बड़ो एडवांटेज. भाषा विषय रे आपणंकु ओडिया हिंदी ओ इंग्लिश मध्यरु अति कमरे 2टी भाषा भल भावरे जानिबा दरकार. जेउ माने अधिक भाषा जानंती तांकु प्रायोरिटी मिलिबो. आवेदन करिबा अत्यंत सहज. आपणंको रेज्यूम शोरील बा पोर्टफोलियो पठांतु आम ईमेल रे nishkarsha.editor@gmail.com अथवा सीधा सड़क व्हाट्सएप करंतु 9937619039 बा 7894855662. एनटीवी निष्कर्षा केवल एक चैनल नुहे एहा एक प्लेटफॉर्म जेउठी आपणको टैलेंट को सठिक सुजोग मिलिबो. आसंतु आम टीम रो एक गुरुत्वपूर्ण अंश हुअंतु. आमे आपणके आपणको सह कथा हेबाकू अपेक्षारत. धन्यवाद. Welcome once again. The ongoing conflict in the Middle East is now having a global impact, leading to rising oil prices and increasing fuel rates. As international crude oil prices continue to climb, India's domestic market is feeling the direct effect. The surge in petrol and the diesel prices is causing widespread concern and appreciation among the public. In light of this serious situation, the Prime Minister has urged citizens to be mindful of their consumption. He has appealed to the nation to use imported goods such as petrol, diesel, fertilizer and the gold judicially only as needed. The Prime Minister emphasized that everyone's cooperation is essential to alleviate additional pressure on the country economy and to prepare for the future potential threats. जदि बारंबार पेट्रोलियम मंत्रालय तरफ
ए कथा बाहर को आसुची मीडिया को आसुची जे कोनोसी पेट्रोल पंप को ड्राई करा जिवो नाही तेलर अभाव नाही ताहले तैल कंपनी परिचालना करबा भितरे एभली स्थिति काहेकि सृष्टि होउची कोनोसी डीलरशिप रो जदी पर्सनल इंडिविजुअल प्रॉब्लम अछि ताकू छाड़ी देले अपर्याप्त जगार काहेकि एभली न्यूज आसुची जे तेल पहुंचला नाही बोली ये तैल कंपनी याकू निश्चित भाव में जोगाण विभाग सहित परिचालना करबा दरकार जे डीलर जदि पेमेंट देइछि ताल ताकू से दिन लोड डिस्पैच हवा दरकार जदि लोड डिस्पैच न होउछि तार स्पष्टीकरण भी आसीबा दरकार कारण जदि आंध्रर क्राइसिस जोगु आमर नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट गुड़ाकरे बिक्री बढ़ला ता बुझा पड़िला किंतु राज्य रे अन्य जिला गुड़ाकरे काहेकि तेल अभाव देखा जिवो जदि जोगाण ठीक थिबो ताले कस्मिन काले तेल अभाव होबो नाही तैल कंपनी को निजर जोगाण उपरे मते लागुची टिके नजर दबाकू पड़िबो नहीं नाही नुहा कहि परिबानी सरकार को सहित तैल कंपनी गतकाली भी मु भाबुची बोधे मीटिंग थिला सरकार निश्चित पेट्रोल पंप ड्राई आउट रो परिस्थिति को संज्ञान को नेइकिरी तैल कंपनी मान को डकैथिले कथा हवा पई तो आशा करूची जे तैल कंपनी माने निजर निज भितरे तीनोटी राष्ट्रायत्त तैल कंपनी भितरे परस्पर हानि कमैबा पर जो चेष्टा करुथिबे जे मोर कम बिक्री हेले मोर हानि कमी जीवो ये प्रतिस्पर्धारू बाहरी किरी लोकंक सेवारे केमिति तेल जोगई दबार अछि सेटा करिवार अछि देखंतु जेते कहिले मध्य लोक गुजब को बेसी विश्वास करंती राष्ट्रायत्त मीडिया एबे भी गुजब करूची जे तेलर दर वृद्धि हबो जदि पेट्रोलियम मंत्री कहिला परे गोटे न्यूज चैनल पब्लिश करिवो जे दर वृद्धि हबो बोली आठु दुर्भाग्यजनक आउ कोन हेई पारे राष्ट्रायत्त तैल कंपनी दर वृद्धि हेई नाही आंक दर तुलना रे तांकर दर अधिका अछि सेति पई ग्राहक सेठी जीवा को इच्छुक नुह आउ अन्य जो कंपनीटी से बहुत कम समय ऑपरेशन करूचंती अधिकांश समय बंद कर दउचंती तो तांकरी जो माने रेगुलर कस्टमर अछंती तांकू से माने फीड करूचंती अन्य कस्टमर तांकर राष्ट्रायत्त तैल कंपनी आड़िकी मुहाइचंती जहा जोगु राष्ट्रायत्त तैल कंपनी डीलर मानकर बिक्री बहु मात्रा रे बढ़िची जदि एप्रिल मासर डाटा आपण देखिबे राष्ट्रर तैल बिक्री उपरे पेट्रोल रे ग्रोथ हेछि 6.6% आई डीजल रे ग्रोथ हेछि 0% किंतु ओडिसा रे सेही जिंस पेट्रोल रे ग्रोथ हेछि 15% एवं डीजल रे ग्रोथ हेछि 22%। आमे रिक्वेस्ट करिछु स्टेट लेवल कोऑर्डिनेटर जे ऑयल इंडस्ट्री रे अछंती सी आजी किंबा काली हमकु डाकिबे आमे एभली कोनोसी स्थिति ओडिसा रे उपजीवा को दबाकू चाहू नाहू जोथरे ग्राहक हैरान हेबे सेति पई तैल कंपनी राज्य सरकार एवं डीलर संघ ये तीन जनक भितर सामंजस्य रहिले ग्राहकों को स्मूथली पेट्रोल डीजल जेमती दैनंदिन किनिबा दरकार सेमिति आमे जोगई देई पारिबु। The Odisha government is planning to convert all the buses operated by Odisha State Road Transport Corporation into electric vehicles as part of its push towards eco-friendly transport. Transport Minister Vibhuti Jaina said the state government is also working on expanding EV charging infrastructure to support the growing use of electric vehicles. According to the minister, approval has already been given for setting up 100 EV charging stations across the state, out of which work on 30 stations has been completed. Around 15 charging stations will be established in Bhubaneswar alone. Jana said the centre and the state government are encouraging use of EV to reduce pollution and promote environmental protection. The use of electric vehicles will also help in reducing fuel expenses. The minister further stated that the Chief Minister Moncharan Maji has already reduced his vehicle convoy and the other ministers are expected to adopt similar measure. Vibhuti Jaina also said he would start travelling in EV vehicles from Thursday and would use buses whenever required. तो एसआरटीसी रो जते गाड़ी अछि ताकू को आमे ईवी कन्वर्ट करबो ले जे मैन्युफैक्चरर से आसीबो आमे ताकू सुविधा सरकार जते सुविधा ताकू जमी जमा जोगै दबा एवं सी हमर सब गाड़ी को ईवी कन्वर्ट करबो ताकि सस्ता हेबो एवं माननीय प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री आग्रह अछि आमे समस्त ईवी रो व्यवहार करबा आ हमर अचल बस को मध्य सचल हे जिवो
आमे लाभान्वित हो एपटे परिवेश दृष्टि एवं आमर जो कथा आग्रह अच्छी आमर संचय भी रहिबो एवं प्रकृति परिवेश संतुलित आधारित आम इभिर व्यवहार करिबो आउ जो गाड़ी भी आसीबो डिपार्टमेंटल गाड़ी गुडा को मध्य जेते सरकारी गाड़ी सब डिपार्टमेंटल गाड़ी गुडा मध्य आग्रह करिबो। Odisha Panchayati Raj Minister Nambinaran Naik today inaugurated the much-awaited mega piped water supply project in the Mahanga and the Nishkarsha block of Cuttack. This initiative is a significant development for the residents of this area. The large-scale project is expected to provide a permanent solution to the drinking water problems in approximately 44 gram panchayats across the Mahanga and the Nishkarsha blocks. This will ensure access to clean and safe drinking water for thousands of families. During the inauguration ceremony, Minister Naik criticized the previous government, stating that if the former administration has been committed to the development of the people, this project would have been completed many years ago. The minister added that his new project marks the beginning of a new era and the development in the Cuttack district and will bring about a significant positive change in people's lives. आज 478 कोटी टंकार आज आम शुभ उद्घाटन करूँ से भितर आम 144 टी भित्तिप्रस्तर स्थापन कलु एवं 291 कोटी टंकार आम शुभ उद्घाटन कलु जो ठारे कि बड़ मेघा प्रकल्प अच्छी ए मेघा प्रकल्प 2019 मसीह आरंभ होता किंतु ए प्रकल्प 2022 संपूर्ण होगा कथा आज 2026 आम संपूर्ण करूँ ए हूँ आम मानक दुर्भाग्य जो माने विगत दिन रे सरकार रे थिले से माने लोकंक पई दरद नथिला योजना पई तांकर आकृष्ट नथिला से माने केवल योजना ही प्रस्तुत करुथिले किंतु कार्यान्वयन करुनथिले आजिकार सरकार आजिकार मोहन माझीकर सरकार लोकंकर सरकार आमे गोटे टाइम बाउंड वर्क रे काम करूछु ए जो प्रोजेक्ट हेछि 44 टी पंचायत 211 टी गाँ को पानी जीवो ए कटक माटीर एक प्रथमतः पानी पहुंचवा जो कार्यक्रम अच्छी से कार्यक्रम भितर आगामी दिन में भी आम संपूर्ण कटक को समृद्ध ओडिशा प्रदेश को 2027 मार्च सुधा में पानी देबू ए प्रकार निष्पत्ति नहीं आजिका लोकंकर सरकार काम करुछि एवं आगामी दिन में मिशन शक्ति माध्यम आम गाँ को रास्ता देबू पानी देवा संगे संगे बिजुली भी देबू एवं आभिमुख्य नहीं जे आगामी दिन में भारत वर्षर जदि भारत वर्ष इंजिन हेब प्रथम डबा किए हेब से होछि ओडिशा प्रदेश से प्रकार कार्यक्रम नहीं आजिकार सरकार काम करुछंती एवं प्रत्येक विषय को आज निर्णय काम आरंभ करने संगे संगे लोक समर्पण करुछंती आ अल्प दिन भितर आम से प्रोजेक्ट को आम लोकार्पण करूँ कारण आम गोटे डेडलाइन अच्छी आम महंगा कथा नुहे आम कटक जिला ओडिशा प्रदेश समस्त घर को पानी देवा यशस्वी प्रधानमंत्री जो संकल्प रखिंट से संकल्प भितर ओडिशा मुख्यमंत्री मोहन माझी नेतृत्व में आम सब कार्य करूँ ए प्रकार भरोसा विश्वास आज आपण देवा। The India Meteorological Department has issued an orange warning for several Odisha districts for tomorrow. This indicates a likelihood of severe thunderstorm accompanied by the lightning and the strong gusty winds. According to the IMD bulletins, thunderstorm with lightning and the surface winds dusting between 50 to 60 km per hour are highly probable into the afternoon and the evening. This is expected to affect one or two places within the district of Kandhamal, Raigada, Koraput, Malkanagiri, Anugul, Dhenkanal and Gajapati. The specific districts have been placed under the orange warning. For the rest of the state, the IMD has issued yellow warning. Thunderstorm with lightning and wind reaching 40 to 50 km per hour and anticipated in Mayurbhanj and Sundargarh, Jagatsinghpur, Puri, Khurda, Nayagarh, Cuttack, Ganjam. And additionally, districts such as Jharsuguda, Bargarh, Sambalpur, Deoghar, Sonpur and Nuapada, Balangir, Kalahandi may experience thunderstorm with winds blowing at speed of 30 to 40 km per hour. चर्चा में आप सभी को स्वागत करती हूँ। पिछले 24 घंटों के दौरान ओडिशा के ऊपर अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हुई। सबसे हाईएस्ट रेनफॉल 96 मिलीमीटर बानकी स्टेशन कटक डिस्ट्रिक्ट से दर्ज की गई है। मैक्सिमम हाईएस्ट टेम्परेचर 40.5 डिग्री सेल्सियस तितलागढ़ स्टेशन बलांगीर डिस्ट्रिक्ट से दर्ज की गई है। सिग्निफिकेंट वेदर सिस्टम
साउथ वेस्ट बे ऑफ बंगाल और एडजॉइनिंग वेस्ट सेंट्रल बे ऑफ बंगाल के ऊपर बना हुआ वेलमार्क लो प्रेशर एरिया उसी क्षेत्र में उपस्थित है और इससे संबंधित अपर एयर साइक्लोनिक सर्कुलेशन समुद्र तल से 5.8 किलोमीटर ऊपर तक फैला हुआ है। मौसम पूर्वानुमान अगले 24 घंटों के दौरान ओडिशा के डिस्ट्रिक्ट जैसे कोस्टल ओडिशा के डिस्ट्रिक्ट्स रायगढ़, कोरापुट और मलकानगिरी डिस्ट्रिक्ट्स के कुछ स्थानों पर और ओडिशा के सभी डिस्ट्रिक्ट्स के 1-2 स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। फोरकास्ट डिस्ट्रिक्ट्स के 1-2 स्थानों पर थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग चेतावनी दिया गया है। साउथ ओडिशा के 1-2 स्थानों पर थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग गस्टी सरफेस विंड स्पीड 50-60 kmph के साथ चेतावनी दिया गया है। That's all for now. Stay tuned for more updates.